No. Absolutely not. Sadly, but no. Do I think that there is mobility of women in Pakistan? I feel like it's very restricted and there are multiple reasons for this. मुझे ऐसा लगता था जब मैं एक यंग गर्ल थी कि हम जब निकलते हैं तो हमें अपने किसी भाई के साथ जाना चाहिए, फैमिली के साथ जाना चाहिए, और वो डर और खौफ आज तक मेरे अंदर है. It's not just safe and it's also not even that accessible. ठीक है? Because so I live very far away and I have to come to my university almost every single day, which costs me almost like 700, 800, 900 rupees, which does not make sense, and I travel by a rickshaw. ठीक है? If I was a guy, I could have just taken a bike, but I cannot. Buses are always not safe because the amount of people that go on in a bus and then they have this extreme entitlement towards female bodies that they feel like it's completely okay to like sexually assault women on buses. Happens all the time. पहली बात तो जब लड़की ड्राइविंग सीट पे होती है तो जो भी बंदा यूजुअली मेल डोमिनेंट सोसाइटी हमारी ये बिलीव करती है कि लड़की है तो इसकी ड्राइविंग सही नहीं होगी. ठीक है, नंबर 1 तो हमें यही से बात फील कराती है कि यार अगला बंदा हमें आके पीछे से हॉर्न देगा या कट मारता हुआ जाएगा. मुझे लगता है कि लड़के रिस्पेक्ट नहीं कर पाते इस फैक्ट को कि दैट वुमेन कैन ड्राइव एज वेल एंड दे कैन ड्राइव बेटर देन दैट. Sure, totally agree. First and foremost, you have safety as a major reason. If women do not feel safe when leaving their homes, chances are that their mobility will be restricted. Obviously, safety is something that differs across all different layers of the socioeconomic scale, and the need to leave one's house also is a driving factor. ये सिर्फ खौफ हमारे अंदर नहीं, माशरे ने हमारे अंदर डाला है, क्योंकि हम जब जाते हैं तो बच्चे से बड़ा तक हमें इस तरह से स्टेयर करता है कि हमें समझ नहीं आता कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है. फिर हमें ये फील हो कि शायद हमारी ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम वेस्टर्नाइज कपड़ों में तो हमें स्ट्रीट्स पे ऐसे नहीं जाना चाहिए, हमें गाड़ियों में जाना चाहिए. अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो वी कैन ब्रिंग आवर चादर और दुपट्टा. मगर तब भी मुझे ऐसा कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ. आंखों में आंखें डालने के देखने वाले और घूरने वालों का आज भी वही हाल है. Because even if I do, yes, there are women who are taking bikes, but those who do are often, almost always, harassed by male bikers or just like men who are in other vehicles. Socially, we've conditioned ourselves and, as a society to see like the public sphere as an exclusively male space. And so when women do venture out into this male space, we're treated with derision and violence and we're treated as unwelcome. ऐसा इंसिडेंट ये हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटी से ही निकली थी और मैं हाइपर स्टार के पास पहुंची थी. देयर वर सम बाइकर्स जो है ना मेरे गाड़ी के आके नॉक कर रहे थे कि दे वर अबाउट टू स्नैच माई फोन और एनीथिंग. मुझे नहीं पता वो क्लैरिटी क्या थी, बट डर के मैं डॉमिनल मॉल में अंदर चली गई. मैंने कहा कि अभी मैंने 10-15 मिनट बाद, बिकॉज आई थॉट दे आर फॉलोइंग मी फ्रॉम समवेयर. Privilege is a huge factor when it comes to talking about mobility as well. The kind of family setup, the kind of family system that one comes from, for instance, if you have a family that does not feel like you should have the kind of movement that many women do, that can play a major role in limiting your movement as well. When we talk about transport, apps that allow women to move from one place to another, there have been so many horror stories about harassment and untoward experiences that really color the ability of women to move from one place to another. दूसरी चीज़ है, कुछ मर्द ऐसे जो बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं, मेरी अपनी बेटी है, मगर ये खौफ हम औरतें सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी माशरा, हम बाहर के माशरे में भी ये फील करते हैं, महसूस करते हैं. एक उस्ताद होने के नाते मुझे बहुत इज्जत मिलती है मेरे स्टूडेंट्स से, और चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, लेकिन स्ट्रीट पे आज भी मैं डरती हूँ. रोड क्रॉस करते हुए भी डरती हूँ, स्ट्रीट गली में जाते हुए भी डरती हूँ. शायद हमें ऐसा लगता है कि हम व्हीकल्स के बगैर मूव नहीं कर सकते. हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है और एक बहुत बड़ी कमी है जिसमें हमें बहुत सारी महरूमी का शिकार कर दिया है. हम जितने पढ़ लिख जाएँ, जितनी भी हमारी एज हो जाए, ये खौफ हमारे अंदर से कभी नहीं जा सकता. So like if I talk about something very personal, so I carry around this shirt. I have short hair. Most of the time what I do is I try to like basically camouflage myself, or just like disguise myself as a boy, so that people don't look at me as much, because I travel in rickshaws. Because you can just like pass off as a man and nobody looks at you, and then you are not the center of attention, which is a very dangerous thing when you're a woman, because then you are open to a lot of threats.
like if someone is looking at you and you look at them back, given the situation of this country, you know that if they get pissed off by that and they attack you, nothing's going to happen to them. But you would be the one who would just live with those things that happened, and they would just go off to their lives, and that's it. जब मैं बहुत छोटी थी, मैं अपनी अम्मी के साथ जा रही थी खाला के घर, और वहीं से मुझे खौफ मेरे बैठा था। एक बाइक पे आदमी गया था और उसे मेरे कंधे पे हाथ मारता हुआ गया था। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया था कि इसने मेरे हाथ क्यों मारा है कंधे पे और उसको क्या इससे सेटिस्फैक्शन मिली है। लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी देखा कि आई डोंट नो किस किस्म का फ्रस्ट्रेशन हमारी सोसाइटी में, शायद एजुकेशन की कमी है। तो उस चीज़ को मैंने ऐसे अडॉप्ट किया कि आई हैव टू सन्स, और मैं उनको ये चीज़ बताती हूँ। मैं मेरे माशाल्लाह भाई हैं, मैं अपने भाई से भी चीज़ डिस्कस करती हूँ, और हमें चाहिए कि हमारी माओं को भी चाहिए और हमारे फादर्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, ख्वाह वो लड़की हो लड़का हो, कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। ये तरबियतों का भी हिस्सा है। और ये जो माशरे में एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ये आज से नहीं है कि अगर आज लोग कहेंगे जी मीडिया बहुत ओपन हो गया, ये बहुत अरसे से है। तो इस चीज़ की कमी हमारे घरों में भी होनी चाहिए। बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी एज के प्रॉब्लम्स को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। जिस वक्त हार्मोनल चेंजेस आती हैं उनके अंदर, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे और केटर करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरी आ सकती है। These instances also happen in local transport vehicles. If you notice, the division for women is also much lesser as opposed to the space given to men. Overall, I think that the mobility for women in Pakistan is in fact severely restricted, and it is something that absolutely must be seen as a real issue and dealt with. The factors that lead to this restricted movement are not issues that are of no significance. They are in fact very real issues that must be dealt with promptly.